To everyone world over, all our brothers and sisters across the globe. We extend a very hearty welcome to all our brothers and sisters. It's a green morning, green afternoon, and green evening wherever you are world over. Let's move on together for yet another powerful evening. That's on Friday, 24th of March, 2023. And we are talking about Vision India Tourism, that is 2047. And today is the part 4. Every day we try and take on something new. Today is also World Tuberculosis Day, 24th of March, ladies and gentlemen. We have got rid of it, but still by and large, if somebody is still suffering with it, we pray to Almighty, they should also get cured, recover faster. ICSI extends a very hearty welcome and a very warm welcome to all our brothers and sisters across the globe, wherever they are. We are connected with our brothers and sisters, those are non-resident Indian diaspora, भारत के प्रवासी जो विश्व भर में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देशों में हैं, उन सभी को आज की संध्या में भारत से हम बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और सभी गुणजन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम, लेट्स मूव अहेड। अपॉर्चुनिटीज एंड सेक्टर्स एनालिसिस ऑफ द विजन 2047। हम आपके साथ रोजाना कोई एक नया सेगमेंट लेके चलते हैं। अगर आपको याद हो, कल हमने गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज की बातचीत की थी, उससे पहले हमने कुछ और विषयों पर भी आपके साथ कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्यों होती है, किस वजह से होती है। सो 2047 तक भारत के लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, भारत किन किन चीजों पर फोकस कर सकता है, what are the opportunities and the sectors analysis on the vision 2047. When we talk on to this, ladies and gentlemen, medical wellness tourism is very important for all of us. We got to be taking care of medical and wellness tourism because India provides wonderful medical facilities world over, and people, they are quite happy. Those are taking treatment in India, they get the appropriate treatment, they recover, they really go satisfied from India after taking their medical treatment. So medical and wellness tourism, with wellness you have got health also, yoga also, meditation also, naturopathy also, spirituality also, and meditation also. A lot of things are being linked up as far as the wellness tourism is concerned. So all of us together, we can take on that particular journey and we can do wonders as far as medical and wellness tourism part is concerned. Then comes your adventure tourism. Now there could be a soft adventure and hard adventure. And it depends on, you're going for water sports, aero sports, you're going for trekking, mountaineering, kayaking, all those kind of things, whatever you take place, you enjoy and you go wherever you feel like being a part of the nature. All of us, we try and work out what best we can do. Now, keeping that particular profile in mind, ladies and gentlemen, rejuvenate the tourism, repackage the tourism. At the same time, that means you got to rethink tourism. That is something very important. We all have to realize, why do we have to rethink tourism? Because post-pandemic, this scenario is altogether different. People have got different expectations. People have got different, the perceptions. People are having lots of apprehensions. Should we travel or shouldn't we travel? Should we travel in the group or should we travel alone? Should we go to the places where there's no other tourist and we are only there, or should we travel in the groups? There are a couple of things which we have to take into consideration, and we plan and we think about it, what exactly has to be done. So keeping that particular part in mind, it is very important. All of us together, if we will work hard, I'm pretty sure we will be able to revive India's tourism very well.
So let's rejuvenate tourism. Then there's a very important part of tourism called film tourism, film induced tourism, cinematic tourism. Tomorrow we are going to have wonderful deliberations on film tourism, film induced tourism, all that we will be taking on tomorrow. And at the same time, rural areas, urban areas, all that part also we will be taking into consideration. Now let's move ahead. There is a village tourism, farm tourism, and you have got agri-tourism, and you have got paying schemes in the rural villages. When you go deep, inside the villages, and you go and see over there how beautiful India is. So what all we should build over there in terms of infrastructure, that we have to consider and we have to see. So there's a village tourism and there's a city tourism. And then comes MICE tourism, meetings, incentives, conferences, exhibitions. That is event planning, event marketing, event management. All that is very important, which we have to consider. Today, we are going to focus on village tourism because Ministry of Tourism, Government of India is focusing on rural tourism. Today, let's talk about rural tourism, village tourism, green tourism, and what exactly is the authentic India. We today talk about that. Now, Ministry of Tourism, Government of India has taken a lot of initiative. If you recall, on 7th of February, when there was a tourism group meeting in Rann of Kutch, the Honorable Union, the Cabinet Minister, G. Kishan Reddy ji, along with his entire team, and when he talked about rural tourism, and he made a wonderful presentation over there on rural tourism. And at the same time, we feel because India still live in villages, it would be more appropriate if we build infrastructure, appropriate infrastructure in the rural areas. It would generate employment, it would generate revenue, it would make sure that villagers, they don't travel to cities, they need not to go, they can stay back there only, they can enjoy a couple of things which can take place over there. Now, recognizing the immense potential of the rural tourism in our country, the Ministry of Tourism has formulated the national strategy and the roadmap for the development of rural tourism in our country. It's an initiative towards Atmanirbhar Bharat, what we talk about. Now, in rural tourism, there are two things, whether active rural tourism or passive rural tourism, whether it should be more education related or entertainment related. It should be a high contact with the rural households and activities, or it should be with the low contacts with the rural household and activities. Should it be high level of facilities and services, or maybe low level of facilities, services? When we talk about it, let's see the SWOT analysis. That is your strength, opportunities, weaknesses, and of course, whatever we have got, let's see the SWOT. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Now, challenges when we are talking about rural tourism, let's first see the strength. India still live in villages. We are in villages. And if you see the Dong village of Arunachal Pradesh, where the sun rises in the morning, is something is beautiful. Indian villages have unparalleled art, craft, culture, music, dances, heritage, cuisine, handicraft, and whatsoever you can think of, they can offer to the visiting tourists. Expansion of infrastructure in terms of there should be roads going to the villages. अगर गांव तक सड़क ही नहीं जाएगी और दूर से ही आप गांव को देख सकते हो लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते. So that area, if it is not accessible, how will we promote tourism over there? Then, well-developed agriculture and farms to provide these stay facilities where people can stay, they can experience the rural life, village life, they can enjoy, because it has got a beautiful climatic condition and a biodiversity. Now, apart from the mainland rural areas, India has lots of coastal line, more than 7,000 kilometers. We have got beautiful Himalayas, we have got deserts, we have got forests, and we have got some tribal areas, amongst others, where the tourists can visit and they can enjoy. I find a lot of people, those who have joined us today,
In fact, 1,000 rupees reward goes to Sarita Singhania ma'am. She is the first to join today on this particular program on the YouTube. I'm grateful to her. Otherwise, also, today she traveled to my childhood place where I was raised, and right the time till I joined the Indian Army, the residence where I stayed, today she had gone to that particular area. She clicked some pictures and sent across to me. I'm grateful to Madam Sarita Singhania ma'am and her colleague, whosoever had gone with her. They had been very kind to send me those pictures, and that takes me to my childhood. You know, do you remember मुकेश का एक गाना है और एक धर्मेंद्र की मूवी है देवर, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का. Your childhood when you go on to, so something beautiful, amazing picture she has sent across, how the area has got developed in the last 50 years when I left a place. Vinny Jaiswal ma'am, wonderful. Mamta Chauhan ma'am, it's wonderful to see her today after a long time. Sakshi, great. Mohit Chaudhary ji, you're wonderful. You're very hardworking. I'm so grateful. You are so active and innovative, and all the time taking a lead. That's something is fantastic. And of course, all other those are joining over here. I'm grateful to all of them. And very special thanks today. My blessings to Sarita Singhania ma'am. I'm so grateful to you. She's running a CSC center. And I pray to Almighty at the earliest, I should visit that CSC center. I should go speak to children, speak to youth, and address them, give them some motivation. And I would like to spend a day right over there where my childhood was, and ma'am has got her CSC center over there in that area. Grateful. Thank you. Julie Subba ma'am, thank you very much for joining us from the train. That's great. When you are writing over here, you're traveling, but you're joining. Thank you. Thank you very much. And at the same time, all others, those are here on platform. I'm grateful to all of them. Thank you very much. Let's move ahead and we go. And Mohit Chaudhary ji, you are writing that you're traveling back to Pathankot. Thank you. Thank you very much. Somebody joining us from Pathankot also. And Sakshi is writing, I'm from Uttarakhand. Don't forget me. I am energetic and I enjoy the sessions. Thank you, Sakshi. Your 1,000 rupees are also to be sent across. Yes, I know. Okay. So, well-developed agriculture and farms to provide stay facilities and experiences. गांव की खुशबू ही अलग है, गांव के लोग ही अलग हैं, गांव के लोग बड़े प्योर होते हैं, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल से प्यार करते हैं, कोई भी दिखावा नहीं है, nothing is cosmetic, and that's what people are looking forward to. You know, there is something very important, beautiful climatic condition and a biodiversity. वो मट्टी की खुशबू ही अलग है, वहां की ऑर्गेनिक खेती ही अलग है. अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड रूरल एरियाज, हमने कहा कि इंडिया की कोस्टल है, हिमालयस है, वो सब एरियाज भी हैं, तो वेल it has got a lot of opportunities. Now, when we are talking about rural tourism, India has a huge potential as far as क्योंकि जो जड़ी बूटियां, Northeast has got lots of green plantation. Habung ma'am keeps enjoying over there, and Noor ma'am also, and all other people, those are there in the Northeast part of India. It has got a rich, you know, the greenery, it has got a rich biodiversity, and there are lots of medical plants which are found in the Northeast part of India. So Ayurveda, ecotourism, nature tourism, natural reserves, wildlife tourism, tiger reserves, biosphere reserves, all that is something wonderful which forms the part of rural tourism. Now, what could be the weaknesses? Lack of prioritization for the rural tourism at the state level or at the national level. Poor, you know, the products which are being offered, they're not into the right condition, the way they should be packed in a hygienic way, it should be given to the visiting tourist. So a couple of things, you know, which have to be taken care of. Lack of tourism awareness and skills in rural areas. लोगों को पता ही नहीं है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अगर ठीक से हैंडल करें, and if they contribute towards the local economy, how there will be economic multiplier.
लोगों को ट्रैक्टर चलाना अच्छा लगेगा, खेत में जाना अच्छा लगेगा, पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगेगा, घर के अंदर जो चूल्हे पे खाना बना है वो अच्छा लगेगा, आपके घर के अंदर गांव में जहां थापियां हैं, कावडंग है, वो सारा, वो वाली दीवार को दूर से देखना करना, और उसी के साथ साथ हांडी में खाना बनना, वो समथिंग इज ब्यूटिफुल, है ना? So, poor coordination of tourism initiatives, that is also very important, we have to see. Poor resources allocation and lack of inclusive planning and community involvement. And also there is a capacity gap at the Panchayati Raj institutions, basically with regard to promotion of rural tourism. And of course, poor service delivery and lack of implementation. These are some of the weaknesses which we can overcome अगर हम try करें तो. अब अपॉर्चुनिटीज क्या है? गांव का बंदा शहर भागता है, क्यों भागता है? वो कहता है वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर वो सारी अपॉर्चुनिटीज आप गांव में देखो तो शहर में कोई नहीं भागेगा। पीपल वुड बी वेरी हैप्पी। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, वहां पर जॉब्स भी मिलेंगे, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी, वहां की एरिया की प्रमोशन भी होगी, लोग वहां आएंगे, लोग वहां एंजॉय करेंगे, एंड दे विल कैरी वंडरफुल मेमोरीज फ्रॉम योर प्लेस व्हेन दे विल विजिट योर प्लेस, and they would say, wow, what a beautiful. चलिए आगे चलते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर विलेजेस के बारे में भी, जो हमारे बाउंड्री वॉल के साथ साथ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए भी बहुत एफर्ट दिए हैं। नाउ व्हाट कुड बी द चैलेंजेस? द चैलेंजेस व्हेन यू टॉक अबाउट लैक ऑफ रिलायबल डाटा, लैक ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, लैक ऑफ वेल प्लान अप्रोच, एंड समटाइम अगर आप ठीक से किसी चीज की व्यवस्था ना करें तो आप पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरी एक और बात है, जो बाहर के लोग आते हैं वो अपना ठाट बाट, चाल ढाल, अपना अंग्रेजी तरीका वो सब दिखाते हैं। तो उससे जो लोकल बच्चे हैं, जो यूथ है, उनके सोशो कल्चर पर कहीं कोई उसकी छाप या कोई उसका इन्फ्लुएंस ना रह जाए। हमें ये ना लगे कि वो भाई ज्यादा अच्छा है और हम कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना कुछ एक स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी रूरल टूरिज्म की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है, और रूरल के साथ साथ उन्होंने एग्री टूरिज्म, फार्म स्टे, दी बेड एंड ब्रेकफास्ट, होम स्टेज, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, जो बातचीत कर रहे थे सब उसी का ही हिस्सा है। Now state should identify the cluster of villages. एक एरिया में कुछ एक गांव इकट्ठे होके, जिनके अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल है, वो सब इकट्ठे होके उसमें लोकल आपकी क्राफ्ट है, लोकल कुजीन है, म्यूजिक है, डांस है, पपेट शो है, थिएटर है, स्ट्रीट ड्रामाज हैं, एग्री टूरिज्म है, ऑर्गेनिक फार्म है, फार्म स्टेज है, हर्बल प्रोडक्ट है, टी के गार्डन्स हैं, योगा है, मेडिटेशन है, लेक्स है, वेटलैंड्स है, इको जोन्स हैं, रूरल स्पोर्ट्स हैं, रूरल कल्चरल इवेंट्स हैं, और रूरल नेशनल पार्क्स हैं, रूरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उन सब के ऊपर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। Now, there is a need to build the capacity of all the stakeholders involved in rural tourism. जितने भी लोग रूरल टूरिज्म में जुड़े हुए हैं, उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूरल टूरिज्म क्या है, रूरल टूरिज्म क्यों है, रूरल टूरिज्म से क्या फायदा है, रूरल टूरिज्म से कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, हम सबको एक इकोनॉमिक बूस्ट कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, सह रोजगार कैसे मिलेगा, हम स्टार्टअप कैसे बनेंगे, एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे। उन सब चीजों को लेकर हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। देयर इज अ नीड टू बिल्ड द कैपेसिटी। अब एरियाज क्या क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग के? बिल्ड हेरिटेज एंड मेंटेनेंस, हाइजीन एंड बेसिक सर्विस स्टैंडर्ड्स, special experiences and value-added services, community participation, environmental impact, destination sustainability, and responsible tourism sales and marketing. अब आपका देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बेस्ट टूरिज्म विलेज का कंपटीशन रखा है। नीचे हमने आपको वेबसाइट भी दी है, rural.tourism.gov.in। इसके ऊपर जाकर आप सारी डिटेल देख सकते हैं कंपटीशन की कि है क्या। एक्सक्यूज मी। सो बेस्ट टूरिज्म विलेज का कंपटीशन है क्या? सो बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो कंपटीशन है, इट सीक्स टू ऑनर ए विलेज
that best exemplifies a rural tourist destination with renowned culture and the assets, and it preserves and promotes community-based values, goods, lifestyle, has a clear commitment to sustainability in all aspects, that is economic aspect, social aspect, environmental aspect. So with the over the far-reaching goal of making tourism one of the drivers of positive change, rural development and community well-being, इसके ऊपर एक कंपटीशन के बारे में बातचीत है। 15 अप्रैल तक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। What are the objectives of this competition? इसका फायदा क्या है? ये कंपटीशन क्यों लाया गया है रूरल टूरिज्म का बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसकी 15 अप्रैल लास्ट डेट है? ये क्यों लाए? It will reduce disparity. It will progress in empowering the rural population. It will enhance the attraction capability and encourage rural areas. It will strengthen the multi-level governance, collaborations, and community engagement. It will give the boosting connection इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंस में, एक्सेसिबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट में, और उसी के साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी होगा, उसकी भी एडवांसमेंट होगी, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपकी एबिलिटीज और आपकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी, और नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा वैल्यू चेन के अंदर। इट वुड एनकरेज बेसिकली सस्टेनेबल जो हमारा मेथड है to make better use of resources, reduce emissions and reduce waste, वो सारा इसका हिस्सा होगा जो सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब आगे आइए। Promote the connection between the resilient, equitably distributed and sustainable food system and tourism, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ increase the conservation of natural and cultural resources. That is also very important. अब एरियाज ऑफ इवेल्युएशन क्या क्या है? अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से 17 तक देखते हैं तो उस सब के अंदर क्या आता है और कौन कौन सा एसडीजी कहां पर जुड़ा हुआ है, दैट एंटायर थिंग यू कैन सी इट योरसेल्फ। कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, प्रमोट एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है, सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या है, environmental sustainability क्या है, tourism development and value chain integration, very important, governance and prioritization of tourism, infrastructure and connectivity, health, safety and security, which every foreigner, every tourist, every visitor is looking forward to. Now, जो बेस्ट टूरिज्म विलेज का लेबल है वो कैसे मिलेगा? Villages recognized as best tourism villages will be nationally awarded by the Ministry of Tourism, Government of India. बड़ी अच्छी बात है। The national awarded village will be featured on the different portals, handles and websites of the Government of India. Villages recognized as best tourism villages will benefit from the visibility and national recognition as an outstanding example of a destination. जिस एरिया को कोई नहीं जानता है वो ओवरनाइट आपका पॉपुलर होगा, लोग उसको जानेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो देखते हैं। नाउ द कॉल फॉर एप्लीकेशन इज ओपन टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, low population density and not exceeding 25,000 inhabitants, located in radius of the famous places, tourist destinations or landscape, all that is also to be taken into consideration. Having traditional activities including agriculture, craft, cuisine, etc. Having history of community value or based on past achievements. Villages wishing to submit their applications must duly fill in and submit the online application form before 15th of April. No other form of application will be considered. So you must apply. You never know कहाँ जैकपॉट लग जाए। So इसका पूरा जो कंपटीशन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन भरिए, ऑनलाइन भरिए, रिव्यू कीजिए, इवैल्यूएशन बाय डिस्ट्रिक्ट होगा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट 3 टूरिज्म विलेज फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट, फिर वो जो 3 बेस्ट विलेजेस होंगे वो पास ऑन किए जाएंगे मिनिस्ट्री की टीम को। स्टेट रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बूस्ट टूरिज्म विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट 3 टूरिज्म विलेजेस फ्रॉम एवरी स्टेट, रिव्यू एंड इवैल्यूएट
the best tourism villages from every state. And finally, you see announcement of the best rural tourism villages by Ministry of Tourism, Government of India. Step 1 क्या है? एप्लीकेशन भरिए. स्टेप 2 क्या है? एप्लीकेशन भरने के बाद रिव्यू कीजिए और उसको इवैल्यूएट जो है वो डिस्ट्रिक्ट से होगा. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ बेस्ट 3 रूरल टूरिज्म विलेजेस फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट में से 3 अच्छे विलेजेस को चूज किया जाएगा. यू कैन वेल इमेजिन. स्टेट रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. अब आगे आ जाइए. सिलेक्शन ऑफ बेस्ट 3 रूरल टूरिज्म विलेजेस फ्रॉम एवरी स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फ्रॉम एवरी स्टेट. नाउ इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन द सबमिशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म. बोथ राइट अप एंड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन. या दोनों चीजें कर सकते हैं. Each question in the application is assigned with the marks also mentioned in the application form. The state will mark each submission. After the evaluation of every entry, the best will be selected. चलिए आगे चलते हैं. Results will be based on the 3-stage process. Selection of best 3 villages, best of 3 villages of the state. पहले डिस्ट्रिक्ट का हो गया, फिर स्टेट का हो गया, और फिर फाइनली सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस ऑफ इंडिया. तो द लास्ट डेट इसकी क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए? 15 अप्रैल. नीचे वेबसाइट दी हुई है, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं. सो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, रूरल टूरिज्म को प्रमोट कीजिएगा. हम चाहते हैं कि जो हमारे रूरल बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आवर चिल्ड्रन, दे शुड ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारा चेंबर 1994 में इंडिया का सर्विस इंडस्ट्री का पहला फिनिशिंग स्कूल लेकर आया, जहां पर बच्चों की पर्सनालिटी, जहां पर बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, उन सब चीजों पे बहुत काम हुआ. और 52,000 यूथ के करीब निकले हैं और 35,000 टीचर्स का भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ. अब हमारा कोरोना से पहले ग्राउंड पे फिजिकली ब्रिक एंड मोटर का एक पूरा फिनिशिंग स्कूल का सेटअप था. बट नाउ पोस्ट पैंडेमिक इट्स ऑल डिजिटल. Wherever you are, you can take the coaching from there and you can deliver the coaching. Both the areas are equally important. या तो आप स्टूडेंट है या टीचर है, but if you're a teacher, you are a co-learner, and if you're a student, then you've got a mentor who has to help you. So digital inspirational lab is very important. Your mental wellness, physical wellness, professional wellness, social wellness, economic wellness और कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स का और बच्चों का मोटिवेशन बहुत जरूरी है. अगर आप ICSI के होम पेज पर आएंगे, icsiindia.in, you will be able to log in and you will be able to get lots of information. ये हमने एक बॉडी, एक चेंबर 2001 में बनाया था, फीस्ट, फोरम ऑफ एजुकेटर्स एंड स्किल प्रोवाइडर्स ऑफ टूरिज्म. It's basically to help every youth, every teacher to move to the next level of development. ये हमारा एक दिन का एक खास प्रोग्राम है, Rethinking Education, Skill and Job Post Pandemic. It will be like an interactive session with lots of case studies, and that's what, should you wish, we can be partner, we can come to your institution, we can deliver, we can take care of. So ladies and gentlemen, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. कल का प्रोग्राम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. अभी तक हमारे 1866 वेबिनार्स कवर हो चुके हैं. आपका कल सुबह 11 बजे एक विशेष कार्यक्रम रहेगा. That will be Chat GPT for the rural youth, that is women and educators. ये मैडम सरिता सिंघानिया करेंगी, जो CSC एकेडमी से हैं और न्यू दिल्ली से हैं. She would be coming tomorrow and sharing her vision with us. उसके बाद ladies and gentlemen, दोपहर को आपका 2:30 बजे दुबई से डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, which you can watch on YouTube. You can post your views, comments, whatsoever you feel like. And this is an ongoing program. Every Friday and Saturday, we are doing the capacity building program, complimentary, free of cost,
with the Dubai-based company, and that is dedicated to youth, teachers, counselors, trainers, coach, mentors. Anybody can come for this particular program. You can enjoy. And tomorrow is Saturday. Don't forget, you have to meet Venerable Ravi Vedhankar ji. अपना पीछे वाला अपना जो जैपनीज लैंग्वेज का साइनेज है जो आपने सीखा है उसको सामने रखिएगा और तब जब प्रोफेसर साहब हमारे वेनरेबल रवि वेदांकर जी बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। और कल रात को 8 बजे का एक विशेष कार्यक्रम होगा, फिल्म टूरिज्म पोटेंशियल। आपको याद है थोड़े दिन पहले कौन सी पिक्चर बनी थी? वो थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें 3 लड़के गए थे, यहां पर 3 लड़कियां जा रही हैं। ये है झीले जरा, ये स्पेन के अंदर शूटिंग। हम कल रात फिल्म टूरिज्म पोटेंशियल की बातचीत करेंगे। हम आपको क्रिश के साथ सिंगापुर लेकर चलेंगे, कहो ना प्यार के साथ हम आपको न्यूजीलैंड लेकर चलेंगे, और दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लम्हे चांदनी मोहब्बतें, इसके साथ हम आपको स्विट्जरलैंड लेकर चलेंगे। उसी तरीके से और बहुत सारी पिक्चरों की हम बात करेंगे और डेस्टिनेशन लाइक स्पेन की बातचीत करेंगे। ये हमारा जो फिनिशिंग स्कूल से डिजिटल लैब है उसका 1 मिनट का वीडियो है, आपको समझ आएगी कि डिजिटल इंस्पिरेशनल। Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. Welcome. और देखिए, यदि आप किसी सब्जेक्ट को प्यार करते हैं, पैशनेट हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो संगीत के माध्यम से सीखिए। When I left Ministry of Tourism, Government of India in 1993, in 1994 the first thing which I did कि इतने साल जो कुछ मैंने टूरिज्म का सीखा है उस सबको पैकेज किया जाए और इंडिया के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बेस पर एक सॉन्ग बनाया जाए, एक गाना बनाया जाए कि भारत के द्वार है खुले, स्वागत में आपके। आप भी एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके, पग पग पे फूल हैं खिले स्वागत में आपके। भारत के द्वार हैं खुले स्वागत में आपके। मशहूर है ये सरज़मीं दीनो ईमान में।
दिल बिछाए जाते हैं मेहमां की शान में। आओ के दीप है जले स्वागत में आपके। भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके। कश्मीर के पहाड़ हिमाचल की वादियां पंजाब के दिल पे एक नजारों की झांकियां। नदियां ये नाले बाग बगीचे ये चोटियां मनमोहती हुई ये परिंदों की बोलियां। सुर के है साथ सुर मिले स्वागत में आपके। भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके। ये आगरा का ताज वो जयपुर के हैं महल। दक्षिण के मंदिरों में मनोकामना सफल। कोणार्क उड़ीसा का जहां है चहल पहल। खजुराहो की कला से दिल जाए मचल मचल। ये पर्यटन के सिलसिले स्वागत में आपके। भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके। अजब अजंता लोरा की गुफाएं। बुद्धा का मुल्क जिससे नहीं हटती निगाहें। सुंदर है घाट शोक बनारस की हवाएं। लखनऊ की शानो शौक देती है सदाएं। आंचल बहार के हिले स्वागत में आपके। भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके। भारत के द्वार है खुले स्वागत में आपके। भारत के द्वार हैं खुले स्वागत में आपके. Such a beautiful song, such a beautiful melody. 1994, when we packed this entire thing together, I was so fascinated because music brings so much of life. Music brings so much of happiness. So keep enjoying. Tomorrow we are going to go to the film tourism. जीले जरा. पहले था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अब है जीले जरा. पहले 3 boys थे, अब 3 girls हैं. So we are going to enjoy that tomorrow. Let's have that wonderful journey with 3 of the celebrities together.
कल हम आपको स्पेन लेकर चलेंगे, कल सिंगापुर भी चलेंगे, स्विट्जरलैंड भी चलेंगे और न्यूजीलैंड भी चलेंगे और कुछ एक फिल्मों की बातचीत करेंगे कि फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म से किस तरीके से सारी डेवलपमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू टुमारो। कल मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। कल सुबह 11 बजे का विशेष कार्यक्रम है, भूलिएगा नहीं। 2 बजे का भी कार्यक्रम है और कल श्यवास्य रहते होता तक को भी है शाम को 5 बजे और रात को फिर है फिल्म टूरिज्म। Thank you. Stay fit, stay fine, stay healthy. Take care of yourself. Look forward meeting you tomorrow, 11 o'clock, 2 o'clock.